IKS Workshop. Now we start our inauguration function and for the inauguration function, I very humbly call upon the charge principal of our college, Dr. Salma Sattar, for welcoming all the participants today online as well as here. Recording in progress. Honorable Dr. Lieutenant Sparkara, HOD Political Science, Honorable IKS Coordinator, Professor Navarema, Honorable Dr. J.A.T. Khalisai, Dean Faculty of Humanities, Savitribai Phule, Pune University, Pune, Honorable Dr. Buddha Ramchandra Patil, Coordinator, National Center for Indian Languages and Indian Knowledge System. Honorable Dr. J. Shankar Swami Salil, Assistant Professor, Telangana State Horticultural University, Telangana. Honorable Dr. Subhash Nikam Sahib, Principal, MSG College, Malegaon Camp. A very good morning to all esteemed guests, respected scholars, distinguished speakers, faculty members, and dear participants. It's my immense pleasure to welcome you all to this national workshop on Indian knowledge system. It is a platform which is dedicated to exploring the richness of our ancient wisdom and its relevance in modern world. We are honored to have with us the very renowned experts who have dedicated their lives for studying and promoting Indian knowledge system. Their insights will not only enlighten us but also inspire new perspectives on how these ancient traditions can be applied to solve modern challenges. As we know, India has a long tradition of knowledge and encompasses diverse fields, be it be philosophy, science, mathematics, medicines, arts, or governance. From Vedas and Upanishads to Ayurveda and yoga. From Panini's grammar to Aryabhat's mathematics, our heritage is vast and profound. This workshop is a step towards understanding, preserving, and integrating these invaluable contributions into contemporary education and research. I extend my heartfelt gratitude to our organizing committee, Professor Munawwar Ahmad, Dr. Yahya Khan, Dr. Adil, Dr. Ismail, Professor Naveed Akhtar, Professor Naeem, Mr. Abdul Hasib, and all faculty members for their tireless efforts in making sorry for technical error. आयु हो गया था मैडम हो गया ओके A special thanks to our esteemed speakers and guests who have joined us today to share their knowledge and wisdom. We feel proud to share that for this national workshop, we received registration of 432 participants from all over India. I encourage all the participants to actively engage and ask a question and contribute to meaningful discussions. Let this workshop be a platform for learning, collaboration, and deeper appreciation
of our rich intellectual tradition. With these words, with these words, I formally inaugurate this workshop and wish you all a fruitful and insightful experience. Wishing you a great session ahead. Thank you. Have a nice and wonderful day. Thank you. Thank you, ma'am. Dear participants, now we move to the first session of our online national level workshop on Indian knowledge system. And for the first session, I very humbly request Dr. Salma Sarkar, but before that, for her introduction, I call upon Dr. J.A.T to give her introduction, and then the first session will start with the section. Sir, for the first session on workshop on Indian knowledge system, we have with us a very distinguished personality, the in charge professor of our college, Dr. Salma Abdul man having a huge expertise in the Indian knowledge system. He had published various publications in national and international. After getting a promotion as assistant professor, he had been promoted as in charge principal of our college. Now, I would like to call our in charge principal, Dr. Salma Abdul ma'am, to enlighten us and our online participant on Indian knowledge system. I welcome you, ma'am.
करो I'm here before you for talking about Indian knowledge system. Are you ready for talking with me about Indian knowledge system? Indian knowledge system is nothing but understanding India's scientific, philosophical, and cultural heritage. सर 20 PC करो उसको Dear audience, first we should know the introduction to Indian knowledge system as it is a part of syllabus for ADP 2020 and Savitribai Phule Pune University made it compulsory for each and every students who are coming at first year level. So for FY level, it is compulsory paper to know about Indian knowledge system. Then we will see the definition of Indian knowledge system. Along with that, what is the importance of traditional knowledge in modern times? Means we are living in 21st century and in this digital era, we should know our ancient culture, our ancient tradition, which is the rich heritage, and we feel proud to say about our rich cultural heritage which is given by our ancestors, our forefathers, we should today in 21st century salute to each and every Indians, to each and every forefathers of ours who created such type of cultural heritage for us, and we feel proud about that. There are four branches of Indian knowledge system. Means so many branches are there, so many disciplines are there, which is related to Indian knowledge system. We will see one by one. First is philosophy and logic. Philosophy and logic, we know very well, it is a discipline which is uh, which we are studying, and for each and every student, as we know very well that the students of physics, the student of chemistry must know the philosophy, logic, along with Indian traditional languages, Indian ancient languages. Along with that, if science and technology students are there, then we should know Ayurveda also, along with the mathematics, astronomy, science or technology. He should know the ancient cultural history of India. So far as language and literature is concerned, then we feel proud for having a rich and wealthy Indian culture, Indian literature and language. Then we should know our classical epics along with literature, along with the language, arts and architecture. Then, so far as architecture is concerned, here we are mentioning temple architecture, Mughal architecture is there, and so many, what can I say, ancient संस्कृत लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा जो है वहां पर लाइन्स लिखी रहती हैं वेदास की भगवत गीता की महाभारत रामायण यू नो वेरी वेल बट along with that so many Indian culture is there you must know being a student of graduation you must know the Indian rich culture and rich heritage then if you see the Indian architecture.
तो अगर आप मुगलों को देखें या आप किसी मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, तो संस्कृत में लिखा हुआ है मंदिर के इसमें बहुत सारी उनकी लाइन जो हमें बहुत सारी सीख देती हैं। Whatever your religion is, whatever your language is, you must know what is written there. You must be able to read and understand what is written there in Arabic language, in Persian language, in Sanskrit language. You must know. Then Indian knowledge system is the base for knowing all the Indian language, literature, architecture. Along with that, Indian music is there, and you must feel proud about our ancient language, literature, along with music. आज के music, so far as myself is concerned, I don't like today's music of yours, pop song and all. हाँ, और वो क्या आप BTS, I don't like. I feel proud on the Indian classical music, Indian classical dance, Indian classical languages. I feel proud for having such type of heritage, which is very, very, very rich. You must know students. And along with that, there is a socio-economic thoughts. Please close the room. Socio-economic thoughts. We must know what is the Arthashastra and what is the sustainable living practices. We must know. Dear students, जैसा कि आप देखते हैं कि कल तक हमारे जो फोर फादर्स थे, आज आप बैठे हो एसी में, आप बैठे हो फैन में, उनको कोई जरूरत ही नहीं। आप लोगों को जो है आज पिज्जा बर्गर लगा है, उनको कोई जरूरत ही नहीं। वो जो है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग पे बिलीव रखते थे, उनको उनकी सोशियो इकोनॉमिक लाइफ वो इतनी सिंपल थी कि नीड से ही बहुत कम थी, और हमने उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छी तरह से किया। कोरोना के पीरियड में जब लॉकडाउन लगा था, हमारी नीड्स बहुत लिमिटेड थी, हमारी लाइफ स्टाइल बड़ा सिंपल हो गया था, बट हमने देखा था कि उस सिंपल लिविंग में कितना सुकून था। और बहुत सारे बच्चे मुझे क्लास में भी बोलते हैं कि काश के मैडम लॉकडाउन के दिन फिर से आ जाएं, फिर से हम घरों में बैठे ऑनलाइन जो है लर्निंग करें, ऑनलाइन टीचिंग करें। मीन्स व्हाट? आपको भी लगा कि वाकई में पुरानी जिंदगी वो जीते थे। देयर वाज नो नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयर वाज नो नीड ऑफ ऑल द लग्जरियस आइटम्स, ऑल द लग्जरियस नीड्स व्हिच वी हैव। आज के बगैर मोबाइल के आप जी नहीं पा रहे हो। उनकी लाइफ कैसी, बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी, और आप बड़े शौक से लगाते हो स्टेटस कि भाई वो दिन भी क्या दिन थे 90s के। हाँ, आप 90s के तीनों को याद करते हैं, उसको हमने जिया है, वो हमारे थे बहुत कीमती जो हमने जिया है, उसके लिए आप तरस रहे हो कि ना टीवी थी ना मोबाइल था, पर जिंदगी बड़ी सुकून थी। मिल बैठ के एक दूसरे के सुख दुख, एक दूसरे के दर्द तकलीफ बांट लिया करते थे। आज तो ऑनलाइन इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे आपके लाखों चाहने वाले होंगे, और हमारे चाहने वाले बहुत लिमिटेड थे, जिनको हम दिल की बातें कहते थे। तो ऑनलाइन तो सब तुम्हारे हैं, पर दुख दर्द में आपकी पलक के पास खड़ा कौन है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही आपके अपने हैं, वही आपके जो है लोग हैं जो आपके सुख दुख में काम आएंगे। तो वी शुड फील प्राउड। अभी आप देखिएगा कि कंट्रीब्यूशन साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारे हिंदुस्तान का क्या था। हाँ, और आप अगर कभी मनोज कुमार का वो गाना जीरो दिया मिले भारत ने, हाँ, तो जीरो नहीं होता तो मैथमेटिक्स कंप्लीट नहीं होता। और साइंस और टेक्नोलॉजी में आप देखिए देयर इज ए लॉन्ग लिस्ट इन मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन। आप अगर देखेंगे तो सारी चीजें हम लोगों को बहुत कुछ सिखाती हैं। और आज जितने इन्वेंशंस, जितने डिस्कवरीज हमारे फोर फादर्स ने की है, और एक रिच कल्चरल हेरिटेज दिया है साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, मैं समझती हूँ ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। वी शुड फील प्राउड टू बी कॉल्ड एज एन इंडियन and true Indian, true patriotic, because I love my cultural heritage, which is very rich, whether it is the field of science and technology,
whether it is the field of medicine, arts, literature, language, I feel proud to be called as an Indian. तो आप भी कहोगे कांग्रेस से, फिर भी दिल है हिंदुस्तान। फील प्राउड वी आर भारतीय, और हमको बहुत गर्व है कि हम भारत देश के रहने वाले हैं। और मैंने जिस तरह से बात की आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन की, बीमार होते हो तो क्या होता है, बोलेंगे क्या होता है? डॉक्टर के पास जा रहे एलोपैथी कर रहे, सबसे अच्छा कौन सा? दादी के नुस्खे, दादी और नानी के नुस्खे, जो यूनानी पे डिपेंड है, जो आयुर्वेद पे डिपेंड है। और घरेलू नुस्खे कितने अच्छे हैं ना। कोरोना में इसका देखा था नजारा, सारी दवाइयां फेल, और दादी का नुस्खा जिंदाबाद। सर फाड़े पिए थे हमने। हाँ, दादी की चाय जो पिलाती थी मार मार के, छोटे थे तो पिए कि नहीं पिए? हाँ, कैसे सेफ थे हम सब, स्पेशली मालेगांव वाले। हाँ, तो ये भारतीय है हमारा आयुर्वेद यूनानी। हाँ, यही सब चीजें वो हमें बचा के लेके गई। और फिर हमने देखा था कि हमारा मालेगांव का काढ़ा पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ था। एंड फील प्राउड दैट वी आर इंडियंस, वी कैन डू व्हाटएवर वी वांटेड टू डू। फील प्राउड हम सब कुछ कर सकते हैं। और फिर देखिए ना, वैक्सीन भी बनाया तो किसने बनाया? मेरे भारत ने। पूरे वर्ल्ड को कोरोना का वैक्सीनेशन जो दिया, हमारे भारत ने दिया। तो फील प्राउड, वही कहती हूँ कि हम इंडियन हैं। हर वक्त हमें इस बात का गर्व महसूस होना ही चाहिए। फिर मैंने जो है आपको बात की कि बड़ा अच्छा लगता था वो लाइट मनोज कुमार में, जब हम छोटे थे तो गाया करते थे, सिरो दिया मेरे भारत ने। हाँ, भारत वो देश है कि इसके जैसा कोई देश नहीं। ये गंगा जमनी तहसील, ये हर धर्म के लोगों को लेकर चलने की तहसील, ये हर जो है मजहब, हर लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देना। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया एंड वी शुड फील प्राउड टू से दैट वी आर इंडियंस। इंडियन एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो हम देखेंगे आर्यभट्ट के बगैर कंप्लीट ही नहीं होगी। और हमने ना सिर्फ जमीन को फतेह किया, पर आसमानों को भी फतेह किया। और आज हम ना सिर्फ जो है स्पेस में पहुंचे, चांद पे पहुंचे, बल्कि हमें आपने सुना भी था, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। तो चांद के पार भी पहुंच गए हिंदुस्तान। एंड इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो कि हम लोग कहाँ पहुंचे? हाँ, चांद के उस पार पहुंचे, जो कि एक ख्वाब देखा था हमने, और वो ख्वाब हमने पूरा कर दिखाया। और आज पूरे वर्ल्ड को हमने दिखा दिया कि किस तरह से हिंदुस्तान आगे ही आगे डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। फिर इंडियन आर्ट और लिटरेचर की अगर हम बात करें तो क्लासिकल डांस की बात ना करें, मैंने अभी कहा था आई लाइक क्लासिकल डांस वेरी मच, चाहे फिर वो कथक हो या फिर जो है हम देखेंगे दूसरे भारतनाट्यम हो या जो भी डांस फॉर्म हो, आई लाइक इट वेरी मच। स्लोली स्लोली, और एक बेहतरीन मजा आ जाता है वो डांस फॉर्म्स देखने के बाद। आपका क्या है भाई, वो आप जानिएगा। पर आप माइकल जैक्सन को फॉलो करते होंगे शायद, बट आई फील प्राउड टू बी एन इंडियन। मुझे क्लासिकल डांस बहुत अच्छे लगते हैं। सिंगिंग की भी बात हो तो हम देखेंगे कि हम पुराने सिंगर्स को बहुत तारीफ करते। ओल्ड इज गोल्ड, वाकई ओल्ड इज गोल्ड ही है। आप बता दो एक दूसरी लता मंगेशकर, नहीं मिलेगी। एक मोहम्मद रफी बता दो, नहीं मिलेगा। वो है हमारा कल्चर, वो है हमारा रिच हेरिटेज। कहीं ना कहीं हमारा लिटरेचर भी उतना ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। इंडियन नॉलेज सिस्टम में सस्टेनेबल लिविंग की आप बात कर रहे हैं तो कल तक आप देखिएगा ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग था। आज हम लोग मानसून के भरोसे नहीं बैठ सकते। मानसून कब आएगा, कब बरसात होगी, कब फसल आएगी, कब फसल बिकेगी, कब लड़के की शादी होगी, है कि नहीं? बेटी के हाथ पीले करने हैं ना, बेटे के भी करने हैं, बहू भी लानी है। तो भाई आप उसके भरोसे तो फिर बैठ नहीं सकते। इंडियन नॉलेज सिस्टम कह रहा है कि भाई आपको एग्रीकल्चर करनी है तो फिर आपको वेल्स हैं, टैंक्स हैं, या फिर रेन जब हो रही है, मानसून जब आ रहा है, तो आपको क्या करना, क्या है? वाटर का कलेक्शन करना है कि नहीं करना है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो ट्रेडिशनल वे था, उसी को हमें लाना है। आप लोग क्या करते हो, रेन वाटर को वेस्ट होने देते कि कलेक्ट करते?
कलेक्ट करते कितना करते, बहुत ही थोड़ा। कुछ घरों में याद रखो, मेरे फादर करवाते थे हमें। हम पहले जो है क्या करते थे, जैसे ही बारिश आती तो पानी हम लोग जो है ना बाहर बर्तन रख देते थे सब लाइट से, कपड़े के नीचे नहीं, हाँ बीच में एकदम, जहाँ पे साफ पानी नीचे डायरेक्ट आसमान से गिर रहा है वो बर्तन में आ रहा है। मेरे वालिद, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो कहते थे कि पूरी बारिश का पानी भर भर के रखते जाओ। इतनी बड़ी बड़ी बुकलियां थी, बकेट्स, हम लोग उसको वो बंद करके रखते थे। और वो क्या कहते थे कि बीमारी में दवा यही पानी से पी। समझ में आ रहा? फ्रेश वाटर, उससे फ्रेश हो सकता था, उससे बेहतरीन पानी कोई हो सकता था। समझ में आ रहा है? तो हम लोग हमेशा कलेक्ट किया करते थे। तो ये सारी चीजें जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, जो तुम लोग को 1857 की बातें बोले बंद कर, दादी तो को कुछ नहीं समझता, है ना? और दादी नानी को ही तो सब कुछ समझता है। She knows the Indian culture, Indian knowledge system, उससे बेहतरीन आपको कोई नहीं बताएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको कहना चाहूंगी कि आप जरूर मिलिए, दादी के पास बैठिए, नानी के पास बैठिए, और फिर देखिए नॉलेज ही नॉलेज है। क्लास में हम आपको क्या पढ़ाएंगे? इंडियन नॉलेज सिस्टम, जितना अच्छा दादी पढ़ा देंगे। बैठेंगे, बैठेंगे दादी नानी के पास। यस ऑफ कोर्स, यू मस्ट सिट देयर। पूरी लाइफ तक तजुर्बा देंगे, भले से पढ़ाई में आपसे कम होंगे, भले से डिग्री में आपसे कम होंगे, पर तजुर्बा पूरी जिंदगी का है। तो लेना है कि नहीं लेना है? ऑफ कोर्स लेना है हमें। और हमको हमारे इंडियन कल्चर उसको बढ़ावा देना है। आज देखिए एनईपी में, एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब आई, तो उसको इंटीग्रेट किया गया इससे, आईकेएस से। और आज आईकेएस का रिलेवेंस आज के मॉडर्न एरा से, वो एंशियंट पीरियड, वो प्रिमिटिव पीरियड, वो मेडिवल पीरियड, उसमें जो कुछ चलता था, आज भी मेरे इस मॉडर्न एरा में, यानी यू 21st सेंचुरी गर्ल्स, इफ you follow all the rules, all the practices of that era, दादी नानी का पीरियड, पर दादी पर नानी का पीरियड, उसको फॉलो करोगे ना, तो मैं समझती हूँ आईकेएस को मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में वो जिस तरह से रेलिवेंस किया गया है, उस तरह से आप भी रिलेट कर सकते हो। और आप देखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ आईकेएस ना सिर्फ हायर एजुकेशन में किया गया, बल्कि स्कूल एजुकेशन में भी एक एग्रीमेंट किया गया है। और ईयर बाय ईयर हम लोग अपने ये जो कल्चरल हेरिटेज है हमारा एंशियंट, वेरी रिच, वेरी वेरी, उससे हम कनेक्ट होने वाले हैं। तो हम देखेंगे रोल ऑफ आईकेएस इन स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन में भी किया गया है। और आप देखेंगे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और जो दादी नानी की स्किल्स थी, आज हम मॉडर्न एरा में उसको कनेक्ट करके अपनी मॉडर्न मशीनरी से जोड़ के हम लोग उसको आगे ले जा सकते हैं। तो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज भी जो है आईकेएस में बहुत बढ़ गई है। आप यंग जनरेशन के लिए फ्यूचर में एक रिसर्च एरिया मिल रहा है इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर, हमारे एक एक चीज के ऊपर, कि आज मंदिर में टेम्पल के ऊपर वो संस्कृत में ये लाइन्स क्यों लिखी गई, वो मूर्तियां अजंता एलोरा की हमें क्या बता रही हैं। वो जो है मुगल जो है जो कहना चाहिए कंस्ट्रक्शन है, उसके ऊपर वो जो आयात लिखी गई है, जो चीजें लिखी गई है, वो क्यों कही गई है, क्या बोल रहे हैं, वो मैसेजेस क्या दे रहे हैं। अगर आप देखोगे ना, तो हर रिलीजन के जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन है, जो कुछ भी कल्चरल हेरिटेज है, बहुत कुछ मैसेजेस देते हैं। आज अगर आप देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन किया जाता था, कि महल में, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, कि महल में एंट्री होती थी किसी की, उधर ऊपर दिख जाता था, कौन सा महल है सर? हाँ, नीचे अंदर एंट्री हुई, आपका सीसीटीवी में फेल है सर, सीसीटीवी भी हमारा फेल है। महल में किसी की एंट्री हुई और वो कौन से फ्लोर पे बैठे हैं, वो बराबर दिखता था, वो पानी वहां पे रहता था, उसमें से वो पूरा आग से जाता था ऊपर, सब पूरा दिखता था। तो सीसीटीवी भी फेल है सर। ऐसी ऐसी जो नॉलेज है, एक एक चीज में इतनी डेप्थ है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि किस तरह से
हाँ, आप अगर उनके बाथरूम्स जो यूज करते थे वो उसको ही देखोगे तो बहुत कुछ सीखने की जैसी चीजें है हमारी, और आप उससे सीख सकते हो। जहां भी गए हम हमारे कल्चरल हेरिटेज को, तो उसको सीखना है या उसको बर्बाद करना है, करते हैं ना, कुरच कुरच के अपना नाम लिख के आ जाते। यू आर डिस्ट्रॉइंग द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, प्लीज कीप इट सेफ। आप जाइए उसको देखिए तो कितना दिमाग लगाया, किस तरह से ये इमारत बनाई, क्या मैसेजेस हैं। तो हम जितना हमारे एंशियंट और प्रीमेटिव और मेडिवल पीरियड की तरफ जाते हैं उतना हमें नॉलेज मिलेगा। और फिर हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि हमें पीछे की तरफ जाना है। आप हम लौट चलेंगे अपने उस संस्कृति की तरफ, अपने उस ट्रेडिशंस की तरफ, अपने उस कस्टम्स की तरफ, हमारे उन जो रस्म रिवाज रिवायात परंपराएं उसकी तरफ हमें पलटना है। बहुत बेहतरीन थे जो हम सब छोड़ के बैठे। हमको सबको वो पुरानी चीजें पकड़ के चलना है, तभी ये देश आगे तरक्की करेगा। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो ख्वाब देखा था विजन 2020 वो हमने कर दिखाया। और 2030 में भारत महासत्ता सुपर पावर बनेगा। ये ड्रीम जो हमने देखा है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये जो ख्वाब देखा है उस ख्वाब को पूरा करना है। एंड इंशाल्लाह इफ वी विल फॉलो आवर ट्रेडिशन आवर कस्टम our rich heritage, then India will become the superpower in the year 2030, inshallah. And आप कहीं नए रास्ते पे चलेंगे, चैलेंजेस तो आएंगे, तकलीफें तो आएंगी, पर आपको उसको आगे लेके चलना है। जैसे कि चैलेंज अगर IKS की बात करूं, फ्यूचर में IKS के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे कि सबसे पहले नीड फॉर साइंटिफिक वैलिडेशन, मीन साइंटिफिकली इंडियन नॉलेज सिस्टम जो हमारा था उसको हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है कि वाकई वो जो चीजें थी वो आज के दौर में भी बिल्कुल जो है वैलिड है। नोबडी कैन चैलेंज द इंडियन आयुर्वेदा, द इंडियन यूनानी सिस्टम, व्हाटएवर द प्रोसेस ऑफ मेडिसिन वाज देयर ड्यूरिंग दोस डेज, वो हमें प्रूव करना है, सारी थ्योरीज को प्रूव करना है। साथ ही साथ हमें और भी चैलेंजेस है, जैसे डिजिटल एरा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, तो हमें इंडियन जो कल्चर है उसको उसका रिवाइवल करना है और मॉडर्न एरा से कनेक्ट करके हमें आगे लेके जाने का चैलेंज है। पर रास्ता दिखेगा, थोड़ा आगे तो चले, वहां पहुंचेंगे, आगे का रास्ता दिखेगा, और आगे पहुंचे और आगे का रास्ता दिखेगा, चलना तो शुरू करेगा। अलॉन्ग विद दैट आज पूरे वर्ल्ड में हम भारतीय हैं, इसका डंका बजाने की जरूरत है। बिकॉज वी शुड गिव ourselves the global recognition and collaboration। ना सिर्फ पूरे वर्ल्ड में हमें अपनी शनाख्त बनानी है, बल्कि वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट करके वर्ल्ड की जो महासत्ता है, सुपर पावर्स है, उनसे कोलैबोरेट करके हमें उनके कांधे से कांधा मिला के, चाहे फिर वो डिफेंस फील्ड हो, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो, हर फील्ड में हमें अपने आप को साबित करने की जरूरत है। और वो दिन आएगा कि दुनिया देखेगी कि इंडिया इज इंडिया, भारत इज भारत, हिंदुस्तान हो। हम कहते ही हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आप सबको यही कहना चाहूंगी कि हमको हमारे हिंदुस्तान को आगे ले जाने की जरूरत है। आप देखिएगा कंक्लूजन में आपको मैसेज देना चाहूंगी कि IKS जो है इट इज ए ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। मतलब पुरानी चीजें और मॉडर्निटी के नाम पे हमको हर चीजें आगे ले जाना है। मैं हमेशा क्लास में कहती हूँ कि आपकी ड्रेसिंग क्या है, आज की आपकी ड्रेसिंग क्या है। यू आर 21st सेंचुरी गर्ल्स, आप बोलते हो कि हम तो मैडम पहनते हैं, लेगिंग्स पहनते हैं, हाँ क्या क्या है ना आपके, अरे दादी का पैजामा है वो, समझ में आ रहा है, शरारा गरारा क्या है ये सब। आपकी ड्रेसिंग से देख लो, आपके फूड स्टाइल से देख लो, आपके लाइफ स्टाइल से देख लो, सब वही, फिर वही दिल लाया वो टाइप का, यानी वही पुरानी चीजें, ओल्ड इज गोल्ड, और आप सब अप्लाई कर रहे हो। तो मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों का ये संगम IKS है, ये हमें करना है।
and it is the necessity of the time to preserve and promote IKS and आपकी जिम्मेदारी, आप स्टूडेंट्स की, रिसर्चर्स की, हमारे जैसे प्रोफेसर्स की ये बहुत बड़ी जवाबदारी है कि हम सबको IKS का एडवांसमेंट करना है, हमको इसको बढ़ावा देना है, ना सिर्फ खुद फॉलो करना है, दूसरों को भी फॉलो करने के लिए लगाना है और ये हम सबकी कोशिश रहेगी और इंशाल्लाह हम सब उसमें काम करेंगे। तो आप सबको यही मैसेज देना चाहूंगी कि वट एवर इज देयर इन इंडियन नॉलेज सिस्टम फील प्राउड और देखिएगा जैसा चश्मा लगाओगे वैसा दिखेगा, नजर बदलो नजरिया बदल जाएगा। IKS क्यों लाया गया हमारी लाइफ में, भारतीय संस्कृति सभ्यता उसको हमारे डेली रूटीन में क्यों लाया गया, हमको समझने की जरूरत है, उसको अलग एंगल से देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको समझिए, उसके करीब आइए और भारत को जोड़ना है, हमें भारत को तोड़ना नहीं है। आज हम लोगों को दूसरे रिलीजन, दूसरे कल्चर, दूसरे कस्टम्स ट्रेडिशन को फॉलो करने की जरूरत है। वट एवर आपका रिलीजन है वो तो आपका ईमान है, वो आप अपने जो है तो दिल में रखिए, पर जहाँ पे भारत देश की बात आती है तो हमें सबसे पहले क्या समझना है अपने आप को, हम भारतीय हैं, फील प्राउड, गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। इसी मैसेज के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ। मुझे ऑर्गेनाइजर्स ने बोलने का मौका दिया और आप लोगों ने मुझे सुना, थैंक यू वेरी मच एंड फॉलो IKS our traditions in our daily life. Thank you very much. I express my sincerest gratitude to our in-charge principal, Dr. Salma Sarkar, and one very important thing I would like to share with you. As you know that in the resource person, man's name is not given there. The reason behind it is that at the peak of the time, uh, our resource person could not attend us on time because they had some essential meetings at their institution. So they rescheduled their timing. So we were very much perplexed to what to do. So ma'am actually came forward and extended a helping hand to us. And on in the on time, suddenly all of a sudden she told me that I will conduct the first lecture and she conducted very successfully. So thank you once again, ma'am, for upholding this workshop, national level workshop. Now, our very esteemed resource person, Dr. J. Shankara Swami, has joined us from Osmania University, Telangana. So I would like to call upon Dr. Yahya Khan Badan to introduce our resource person and then the second session will start. Please, sir. All of you. So, officer, are you there? Yeah, I'm there. Yes. So, Is my presentation is visible to everybody? yes, sir. Just for few minutes, sir. We have with us our in-charge principal, ma'am, and I will introduce you on behalf of our college. So, all the participants we have, thus our next resource person, Dr. Jagla Shankar Swami, sir, from Horticulture, Telangana State Horticulture University, Telangana. He is there working as assistant professor on a senior scale. He is also been awarded with the Eminent Scientist Award from NPRI and Gilbert Dickey Award from the Europe. He was also the awardee of Best International Scientist Award from Food Institute of Food Research, National Academy of Agrarian Science, and the Ukraine. He also member of different editorial board, journal of the different editorial board. He is also a distinguished scientist award
It's a large agenda. Now I would like to call our distinguished resource person. Thank you very much for your valuable introduction about me. Thank you very much, and all organizers, I'm very thankful to you. So to give an opportunity to deliver this lecture related to the Indian knowledge system. So is it audible? My voice is audible to everybody? Yes, sir, you are audible, sir. या सो किस में सुविधा है मैंने से हिंदी में बात कर सकता हूँ और इंग्लिश और एनीथिंग मिक्स ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस Yes, sir, you are visible in English and Hindi also. So, अच्छा 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 ओके सो सो good morning everyone and all participants and this is a very good theme area Indian knowledge system Vedas to venture because of why I have selected we created the lot of entrepreneurs by using the horticulture because next food this is the future food for the everybody and for this sake because I want to enlighten the eager young minds related to this lecture Indian knowledge system Vedas to venture in horticulture food system because कई सारे टेक्नोलॉजीज है बट ये टेक्नोलॉजी हमको खाना नहीं दे सकता है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर सो एग्रीकल्चर इज द पार्ट ऑफ आवर कल्चर सो ये कल्चर का बारे में थोड़ा मैं जानकारी दे दूंगा सो एंशियंट एजेस में क्या क्या बनाया है मीन्स क्या क्या लिखित पूर्वक है मीन्स क्या क्या मीन्स लाइक बिकॉज दे हैव डिपिक्टेड इन द लिटरेचर सो दैट आई विल बी गोइंग टू शो टू यू एवरीबॉडी हमको पता है बिकॉज वी आर हैविंग ए चार पिलर वी आर हैविंग फोर पिलर्स दैट इज द यजुर्वेदा ऋग्वेदा सामवेदा अथर्ववेद सो दीज आर ज्ञान का मीन्स भांडागार है मीन्स मतलब मीन्स आप बिकॉज वी कैन एबल टू से दैट दिस इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विजडम वी आर हैविंग फ्रॉम our sages so when we are coming to the picture, because like Sapta Rishis, because all Vedas, whatever wisdom we are having in the entire Indian context or throughout the world, these people are the responsible who can means give the knowledge and who made the entire thing to means our generation by generation. These we call as a Sapta Rishi and because I'm speaking only about the Parashara because he is related to the agriculture and he's related to the means horticulture. So how he accumulated the information related how he accumulated the information related to the agriculture and horticulture and medicinal and as well as the Ayurveda. So this is the one of the important science in our entire Indian system and because when we see the history because of Sanskrit because William Durant he said that India is the motherland for our entire race because throughout the world if we are seeing so India is the only motherland for the all kind of the race and all kind of the languages all kind of the religions whichever they derived from in Indian context. Yeah, can means is there anything is going on? thank you. Sorry, sir. Yeah, please. Please on your video, sir. You are not. Okay. Yeah, please on your video. The slide is visible. Slide is visible. Yeah. Slide is visible. Your video is off. Yeah. The camera is off, sir. I'm making. Slide is perfect, sir. Yeah, so I'm making. So just visible. Okay. Yeah. So little bit. Yeah, I can make it. Yes. Yeah. I'll go to the presentation mode. yes. So then I will go. So is it a slide mode? बोल दो यस इट इज परफेक्ट सर परफेक्ट ओके सो इसके बाद मैं आऊंगा मीन्स ये बिकॉज जो भी लोग इंडिया में रहता है वो लोग इंडिया का बारे में बोलेंगे सो हम मानेंगे नहीं सो बिकॉज दीज आर द पीपल ही इज द ग्रेट फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन फ्रॉम यूएस एंड ही वाज टेलिंग दैट so everything because Sanskrit is the mother language
and so from where all kind of the religions and all kind of the race derived from here. So that's why, and as well as one of the philosopher cosmological sciences who studied lot, and he's the literate means he's the enlightened writer in the throughout the world, and he also saying that he's also evidence, he's having evidence that, and we are having a great civilization, because every time whenever we read, we think about the Greek and we think about the Latin, we think about the other civilization. But so now our civilization is more far better than anybody else, and we are civilized people. And these are the four Brihas Samhita, as well as the Vriksha Ayurveda, and so all these Agni Purana, these are the Puranas where they will be going to give the all kind of the information related to the trees and medicine plants and the other technologies related to the business, and how we can able to do the business, and what are the different ventures we can able to open to increase the demand to the product, and to health of the people and the health system. So everything they will speak about, and every wisdom we are having in this. सो जब मैं अगर हॉर्टिकल्चर के बारे में आऊंगा, ये बागवानी है सबको पता है, बट वी यूज टू कॉल इट से हॉर्टिकल्चर। ये हॉर्टिकल्चर क्योंकि बिकॉज वाई वे वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें क्या विशेषता है, और देखेंगे मीन्स सारा फ्रूट्स जो भी खाने के लिए लायक है वो पूरा इंक्लूड किया हुआ है पूरा वेदों में। वो पूरा बिकॉज earlier the first fruit had by the Adam, because the people used to say that in according to the Christian Bible, so the first human being Adam, so he had the fig, that is the अंजीर। so अंजीर से शुरुआत होता है। the first book they have written on लीची, लीची भी मीन्स वन ऑफ द फ्रूट है। सो अभी जितना हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ले लेंगे, पहले फल आएगा, बाद में मीन्स वेजिटेबल्स, एंड एज वेल एज बिकॉज ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स आपको इंडोर में डेकोरेशन करने के लिए भी, एंड आपका जो भी मीन्स परिसर प्रांत है उसको भी प्यूरिफाई करने के लिए कई सारा प्लांट्स है, दैट आल्सो लिस्टेड बाय द चरक संहिता। एंड as well as Krishi Parashara also told that there are several plants which can able to purify our air। so indoor condition का अंदर हम रह रहे हैं एंड एसी लगा के मीन्स सो रहा है, सो इसी का अंदर कई सारा पोल्यूटेंट्स एनवायरमेंट को मीन्स पूरा डैमेज करने के लिए, means like something it will be going to cause the damage to the ozone layer also, the surrounding environment, and we are getting a lot of diseases related to the lifestyle। एंड एज वेल एज जो खाने का चीज होगा वो स्पाइसेस भी हॉर्टिकल्चर का अंदर है। कोई भी स्पाइसेस ले लीजिए मीन्स वो सारा स्पाइसेस मीन्स हॉर्टिकल्चर का रिलेटेड है। एंड एज वेल एज जो पान का पत्ता खाएंगे वो पान का पत्ता भी, बिकॉज इसको बोलता है तांबूल, सो वो भी मीन्स अरिका नट जो भी मीन्स सुपारी है वो सुपारी भी मीन्स हॉर्टिकल्चर का अंदर है। एंड एवरीथिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लांट्स विच आर एडिबल दोज आर इंक्लूडेड इन द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। सो दैट्स वाई बिकॉज जब हम देखेंगे रिसेंटली बिकॉज कोविड का मीन्स प्रभाव हमने देखा था, सो उसी समय पे गिलोय वेरी फेमस था, बिकॉज उससे पहले बिकॉज नो बडी नोस अबाउट दिस प्लांट, नाउ गिलोय इज सोल्ड बाय सो मेनी पीपल इन हाईएस्ट प्राइस। एंड सो दीज मेडिसिन प्लांट्स आल्सो इंक्लूडेड इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, सो ये वेद का जो भी जितना रहस्य है वो रहस्य से भी अभी हम वी आर फॉर्मुलेटिंग लाइक ए सुरा is a one type of a beverage, like it is the amrut, but we are unable to formulate because those they have included lot of ingredients। ये ingredients को ये सही प्लांट को लेके आके उसको प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बट फिर भी we can able to try those things। and even recently we have formulated the artificial pollen for honeybees। this is the first formulation in the world है। वो आर्टिफिशियल पोलन वो पेटेंट भी हो गया। वो पोलन का सब्सटेंसेस मीन्स मतलब आर्टिफिशियल पोलन हनी बीस के लिए कैसे प्रिपेयर करना वो भी मीन्स वेदों में लिखित हुआ है, राइट। लाइक नेक्स्ट हम सोचते हैं बिकॉज नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी एंड हाउ टू प्यूरिफाई द सराउंडिंग, सो अगरबत्ती सब लोग जानता है, बट ये पेड़ का एक पत्ता है लाइक वाइट सेज, इट इज वाइडली यूज्ड। जो भी नेगेटिव एनर्जी है
सो पूरा निकालने के लिए मीन्स वो पेड़ का जो भी पत्ता मीन्स सूखा हुआ पत्ता वो कोशिश करेंगे मीन्स इट विल बी गोइंग टू रिमूव मोस्ट ऑफ द इवन रिलीजियस एस्पेक्ट्स इन वेस्टर्न वर्ल्ड आल्सो and in Indian system also people are using the this kind of the plan. And when I'm coming to the total picture, because they already depicted that throughout India घूम के देखेंगे आपको क्या क्या फल मिलेगा, because already they have depicted that map of the India पुरान जमाना से भी मीन्स क्या क्या फल मिलेगा हमारा भारत देश में. सो वो भी मीन्स दे हैव डिपिक्टेड दैट, बट इट इज दोस आर इन संस्कृत नेम. एंड वेन एवर वी आर सीइंग टोटल वर्ल्ड पूरा दुनिया ये दोनों का प्रिंसिपल का ऊपर डिपेंडेंट है, प्रकृति एंड पुरुषा. And whenever you know this logic, and recently I got award in IAT also when we are presenting in fourth phase of matter, that is the plasma. अगर प्लाज्मा को मैं टैप कर सकता हूं, अगर टैप करेंगे मीन्स उसके साथ कई सारा काम कर सकते हैं, मीन्स करने के लिए मीन्स लायक बन सकता है, बिकॉज आई कैन एबल टू जनरेट untapped energy resources, because that energy it can electrify the so many villages and means and आपको फ्री में भी करंट मिल सकता है जब आप प्लाज्मा एनर्जी को टैप कर सकते हो कॉस्मिक एनर्जी से. सो इसीलिए बिकॉज इधर एक कॉन्सेप्ट है प्रकृति एंड पुरुषा. So everything is a matter, because how that will be going to, the prakriti refers to the cosmic material. पूरा दुनिया मेटीरियल एंड कॉन्शियस एनर्जी का बीच में ही रह गया. सो मतलब आपको मेटीरियल क्या है, कॉन्शियस एनर्जी क्या है, आप अगर जानोगे सो लाइफ विल बी दी वेरी इजी एंड इट्स नॉट एट ऑल टफ एंड यू नेवर बी गोइंग टू दी डॉक्टर. And that's why, because from my childhood onwards I never go to the doctor, because all my fathers forefathers are doctors. We never be going to take the any kind of the medicine, but only we used to depend on the plant and plant based food. So इसका वजह से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी बीमार आ सकता है, आपका एनर्जी फ्लो सही से रहेगा. जब बॉडी का अंदर सही से एनर्जी फ्लो रहेगा, बिकॉज यू नेवर बी गोइंग टू गेट एनर्जी, दैट वी कॉल एज ए, बिकॉज ऑलरेडी आयुर्वेदा में एज वेल एज द वेदों में भी, बिकॉज दे हैव डिपिक्टेड दैट एनर्जी फ्लो अगर सही से रहेगा, बिकॉज आप जिंदा रहोगे, उसी को बोलता है प्राण विद्या. So that is the prana vidya is there from long ages, because I learned how to take the energy from the sun, how to take the energy from the grown trees, how to take the energy from the earth. So that prana energy we learned at the age of 7. We started the yoga, how to do the like Ashtanga yoga, because to make the body flexible and everything, because we are doing the flexibility in, we are bringing the flexibility in the body to means because to increase the flow of the energy like a cosmic, because this we call as a Sirsha Dara up to Mooladhara, because you need to have a energy flow without any obstruction. इसीलिए बोलते हैं like प्रकृति इसका संबंध क्या है. So if I'm taking material, we are the material. So what is the Purusha? So that is the Purusha is the nothing but energy source from where you are taking the energy. Food also energy source. So how the food is will be going to form? Because of the sun. Sun is the energy from where the plants are taking the energy. Again, that the plant is giving the energy to the human being. So there is a passage of, there is a flow of energy from the sun or energy source to the like a sink source, like anything, because that we are taking, we are the sink energy we are taking. That's why we are calling as a sink. So that's why Prakriti and Purusha, whenever we know, half of the life will be very smooth and you need not to go to the doctor, and energy passage in our body should not have any kind of the obstruction. So that is the main theme area in the Vedas. So Vedas always it will be going to tell, but at field level, how we will be going to deliver, it is a very important thing. So I will be going to tell that what kind of the formulations we made by seeing the Vedic script, and I will, and we created the big business also, and so many students of me, and they are the entrepreneurs. And when we see the scenario, how we can able to feed the growing population, so horticulture itself, पूरा agriculture में 18% एरिया को ही ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बट इट इज कंट्रीब्यूटिंग 33% ऑफ जीडीपी. मतलब अगर ये हॉर्टिकल्चर नहीं रहेगा, खाने के लिए हम लायक नहीं बनेंगे, डस्टबिन के साथ हम भी एक कूड़ा बन के रहने के लिए मीन्स जरूरतमंद कर सकते हैं. लाइक बिकॉज वेन एवर वी आर सेइंग हॉर्टिकल्चर में ज्यादातर वेजिटेबल प्रोडक्शन होता है, क्योंकि बिना सब्जी
खाना नहीं खा सकता है. So it is the one of the highest production. अगर देखेंगे वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये कंट्रीब्यूटिंग ज्यादा है मीन्स पूरा इंडिया में, एंड एज वेल एज बिहार आल्सो कंट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्शन ऑफ द वेजिटेबल. सो ये फ्यूचर प्लेट है, आप मानो नहीं मानो, मीन्स फ्यूचर में मिलने वाला एक ही प्लेट होगा, वो हॉर्टिकल्चर का प्लेट होगा. बाकी जितना सीरियल्स है, गेहूं है, ये सारा मीन्स मीन्स खेती करने के लिए सॉइल लाइक नहीं बनेगा, एनवायरमेंट भी सपोर्ट नहीं देगा हमको. इसीलिए ये 3 एरिया के साथ अगर 9 बिलियन मॉस को फीड करना है, फार्मिंग सिस्टम को बदलना है एंड क्रॉपिंग सिस्टम को बदलना है. इसीलिए जितना भी लाइफस्टाइल डिसीजेस आ रहा है मीन्स अकॉर्डिंग टू द आईसीएमआर हो, जो भी हो, मीन्स दोस पीपल आर मिनिमम रिकमेंडेशन चाहिए. आपका खाने में, आपका प्लेट में एटलीस्ट 300 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल होना है अकॉर्डिंग टू द आईसीएमआर, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलके 400 to 500 ग्राम्स होना चाहिए. अगर पूरा मिलके मीन्स अगर आप नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस एंड कम्युनिकेबल डिसीजेस लाइक हार्ट पेशेंट, आप मीन्स स्टैटिस्टिक्स देखोगे पूरा, डाइट एलोन इट इज कंट्रीब्यूटिंग 56.4 रिस्क कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस. आपको जितना हार्ट अटैक आ रहे हैं, पैरालिटिक पेशेंट्स हो रहा है, स्टमक अपसेट हो रहा है, ये पूरा डाइट की वजह से हो रहा है, बिकॉज नाउ आल्सो वी आर वर्किंग ऑन गट माइक्रोफ्लोरा. इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है मीन्स ये वैदिक साइंस को यूज करके हम क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है. एंड ये टर्मिनोलॉजी देखेंगे, ये पूरा द टर्म, ये पूरा वेजिटेबल सप्लाई भी कम होता है, कभी कभी मीन्स ऑनियन का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, टमाटो का प्राइस इंक्रीज हो जाता है. बट ऑल वजह क्या है, बिकॉज हमारा जो इंडिया का वेदर है, आने वाला दिन में वाटर का स्केर्सिटी आने वाला है. ये वाटर स्केर्सिटी का अंदर जो भी आपको उगाना है मीन्स मतलब खेती करना है, ओनली हार्टिकल्चर आर फीजिबल. आप देख लीजिए, जो भी नॉनवेज आपको प्रोड्यूस करना है, इतना मीन्स मतलब 15,415 लीटर्स 1 kg प्रोड्यूस करने के लिए मीन्स जरूरत पड़ता है. अगर चिकन को प्रोड्यूस करने के लिए 4,325 लीटर पर केजी प्रोडक्शन करने के लिए, अंटे मतलब कोई भी चिकन को ले ले 1 kg मांस को आप खरीद कर रहे हो, बट इट इज कंज्यूमिंग 4,325 लीटर्स ऑफ वाटर. आप अगर हार्टिकल्चर क्रॉप्स डाउन में देखोगे, डाउन में अगर कोई भी टी, कॉफी मीन्स टोमेटो सी प्रोडक्शन करने के लिए 1 kg प्रोडक्शन करने के लिए 214 लीटर चाहिए. मतलब आने वाला दिन में जब आपका पानी नहीं है, कैसे खेती करेंगे मीन्स इसका एक प्रश्नार्थक है. राइट. नेक्स्ट थिंग इज बिकॉज वी नीड टू सी दैट कैसे कैसे क्या प्रोडक्ट बन सकता है, क्या क्या बन के हम प्रोडक्ट को प्रिजर्व करके नेक्स्ट जनरेशन को खिला सकते हैं. जब प्रोडक्शन नहीं है, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट खिला सकते हैं. दे सेम थिंग, बिकॉज सेम थिंग वी मेड दैट डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोडक्ट, दीज आर द प्रोडक्ट वी मेड. एंड ऑल काइंड ऑफ द प्रोडक्ट आर्टिकल्चर से जो भी निकलेगा मीन्स ऑल काइंड ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स मीन्स वी मेड. एंड दीज आर द पपाया. पपाया जब प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ये पपाया को पूरा ड्राई करके आप 1 साल तक स्टोर कर सकते हो. दिस इज द सेम न्यूट्रेंट रहेगा, बिकॉज आप कलर देख सकते हो, कलर सेम कलर रहेगा. एंड परफ्यूम मीन्स आप जो भी परफ्यूम यूज कर रहे हो मार्केट का अंदर, वो पूरा डीपीपी सॉल्यूशन है, ये कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कारक है. इसका वजह से बिकॉज फ्लोरल एक्सट्रैक्शन का लगा दिया था. ये कार एयर फ्रेशनर है, आप जर्नी कर रहे हो दूर प्रदेश के लिए मीन्स जर्नी कर रहे हो, एंड वॉमिटिंग सेंसेशन एंड जर्नी सिकनेस ये सारा होता है. इससे विमुक्त होने के लिए मीन्स अरोमा थेरेपी, ये अरोमा थेरेपी का बारे में भी वेदों में मीन्स मेंशन है. एंड ये बाम, लिप बाम, ये एवरीथिंग, सोप एंड एवरीथिंग, पूरा नेचुरल होता था, अभी आर्टिफिशियल हो गया. अभी हमने क्या किया, पूरा अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस वी मेड इनटू द डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोडक्ट्स. एंड फेस मास्क भी अभी हमारा एक मल्टीपर्पज जेल है, एंड इट इज हैविंग ए इंस्टेंट रोल. एंड ये सोप बना रहे हैं हम, बिकॉज सेम थिंग, सेम काइंड ऑफ द सोप्स वी आर मेकिंग. एंड दीज आर द मोरिंगा कैप्सूल्स आल्सो वी आर मेकिंग, क्योंकि पूरा नेचुरल खेती है. 50 एकर्स ऑफ लैंड वी आर हैविंग इन अंडर आवर इंस्टीट्यूट, एंड ये पूरा खेती कर रहे हैं. जो भी मेडिसिन बन रहा है, बिकॉज ओनली वट एवर एंशिएंट विजडम वी आर हैविंग, फ्रॉम दैट ओनली वी आर मेकिंग अ फॉर्मुलेशंस लाइक ए बसमास, rasayana and everything we are making for the increasing the bioavailability of the nutrients. And the same thing that creams, jitna means kai sara cosmetic products we are making,
एंड सोप्स ऑल्सो डिफरेंट डिजाइन में आप सोप देख सकते हो। जो भी कलर है सोप का अंदर, वो कलर इज कमिंग फ्रॉम द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एंड शैम्पू एंड एक्टिवेटेड चारकोल, एंड एग्रीकल्चर का जितना भी वेस्ट होगा वो वेस्ट को एक्टिवेटेड चारकोल बना के ये सोप का अंदर डालना शुरुआत हो गया। एंड हेयर ऑयल, एंड आदिवासी के हेयर ऑयल बहुत फेमस हो गया बिकॉज दे आर एक्सट्रैक्टिंग द ऑल काइंड ऑफ द ingredient from the horticulture crops and medicinal crops, and they are making the, because same thing, we are having a superior, and this kind of the oil we can use for the, and अभी noodles बनाया था, मीन्स लाइक ए कैरेट से noodles। सो अभी मार्केट में जो भी नूडल्स बन रहे हैं मीन्स इट्स वेरी वेरी हार्मफुल, एंड इट इज मैदा बेस्ड, एंड सो इट इज वेरी हार्मफुल टू द बॉडी। सो इसीलिए बोलता है आयुर्वेद में सर्वे रोगा मलमाश्रयंती, आपका मल पेट का अंदर रहेगा जितने दिन रहेगा विदाउट एनी क्लीनिंग ऑफ योर स्टमक, आपका मीन्स बीमारी शुरुआत होना मीन्स इट्स इट विल बी गोइंग टू स्टार्ट। एंड सेम थिंग बिकॉज वाटरमेलन, आप जो भी मीन्स वाटरमेलन खाओगे, खाने के बाद वो रिंड को फेंक देंगे, फेंकने के बाद मीन्स वो वेस्ट हो रहा है, एग्रीकल्चर का वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें 40 to 50% वेस्ट हो रहा है। क्योंकि बिकॉज वी आर वेस्टिंग द फूड अप टू 40%, ये 40% को हम यूटिलाइज करेंगे, सो आप दूसरा कंट्री को भी खिला सकते हो, लाइक बिकॉज ये वेस्ट का वजह से 93,000 करोड़ पर एनम, मतलब एक साल के लिए 93,000 करोड़ हम वेस्ट कर रहे हैं। जब हम सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये ऐसा वाला मीन्स वेस्टेज बनेगा। सो सेम थिंग बिकॉज पोमेग्रेनेट का सीड्स भी बिकॉज हम बन रहा है अभी मुकवास, मतलब जो माउथ रिफ्रेशनर हम बनाया था, बिकॉज ऑलरेडी ये कैसे बनाना है, कैसे करना है, सो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालना है, ये सब कुछ मीन्स उसमें so ancient wisdom में है, because whenever you are getting the some script, we are uncovering the secrets and what are the proportion, how to add, when to add, how to prepare, ये सब कुछ मीन्स डिपिक्शन है लिटरेचर में। सो अंजीर का बिकॉज हमारा मीन्स नेचुरल फार्मिंग है, ये नेचुरल फार्मिंग का अंदर 2 एकर्स वी टोटली डिपिक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट वेराइटीज। एंड उबतान, उबतान बोलते हैं बिकॉज ये फेस मास्क के लिए यूज करेंगे, सो ये टोटल काइंड ऑफ द मटेरियल इट कैन बी यूज्ड। and farmers and everything, because people are coming to us and we are giving the training program also to prepare the different kind of the products। these are the our labs and we are having action plan, because ये करने के लिए पहले बहुत सारा मीन्स प्लानिंग किया था, क्योंकि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो इसके लिए बिकॉज वी आर हैविंग ए डिफरेंट काइंड ऑफ द ट्रेडमार्क, ये द्रव्य गुण भोजनागर है, बिकॉज ये लोगो हमने बनाया था। सो फूड जब भी खाओगे it need to give the means all kind of the properties like a, so it need to give the harmony to the body, it need to give the harmony to the spirit, it need to give the harmony to the mind। so जब भी फूड बनेंगे इसी का साथ बनना चाहिए, तभी it will be very useful for the body। so we are having a registered trademark on behalf of our university एंड हार्टिकोचन, हार्टिकल्चर से जो भी निकलेगा वो हार्टिकल्चर का प्रोडक्ट है। प्लांट एसेंस, प्लांट किंगडम से जो भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे सो ये ट्रेडमार्क का अंदर आ जाएगा। एंड दीज आर द मीन्स नाउ अपकमिंग प्रोडक्ट्स, and we are having a YouTube also, you can browse lot many videos, we are giving the and awareness to the people during the COVID period also, I have given the radio program and सांप्रदायिक आहार विधि विधान। सो मतलब हमारा बुजुर्ग लोग जानता है मीन्स क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल दे प्रिपेयर फॉर अस, मीन्स व्हाट टू ईट, हाउ टू प्रिपेयर, वे टू यूज, हाउ टू यूज, ये सारा कुछ बिकॉज ये सब कुछ नॉलेज है, बट हम भूल के वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न मेडिसिन एंड एवरीथिंग, बिकॉज हम हमारा जो जो भी मीन्स कल्चर है वो कल्चर से मीन्स बाहर निकल के वेस्टर्न कल्चर में जा रहा है। सो सेम थिंग वी टोल्ड दैट ड्यूरिंग द कोविड पीरियड में आप कुछ मत करना, क्योंकि पेट क्लीन करो पहले। सो जो भी मिलेगा मीन्स अच्छा पौष्टिक आहार खा लो, भयभीति नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू शुड बी वेरी स्ट्रांग वेन एवर डिसीज इज कमिंग, योर बॉडी इज हैविंग ए mechanism to heal and it is having own repairing mechanism that we call as a inner engineering। ये सारा टीवी प्रोग्राम से मीन्स सारा प्रोग्राम जो भी मीन्स मीडिया आया उसका सामने मीन्स लिखा है।
We are having a Instagram RT_hub. ये सब कुछ सब कोई फॉलो कर सकता है, बिकॉज रिसेंटली इन राष्ट्रपति भवन में मीन्स ये मेला भी हुआ था, उद्यान उत्सव, वो भी देख सकता है, बिकॉज इवन नासा साइंटिस्ट आल्सो केम टू मीट अस, एंड ही इज अ नासा साइंटिस्ट. Earlier he worked in NASA. Ravi Kumar, VVS Lakshman, cricketers, you know that. So उनका brother है, he worked with the Abdul Kalam, and so and इसरो में काम करके वो रिटायर हो गया. अब्दुल कलाम के बाद मीन्स वो रिटायर हो गया, and he is the scientist every frequently used to visit to take our products and everything. And next ये हमें छोटा बच्चे के लिए मीन्स ग्रैनुल्स बना रहा है. ये ग्रैनुल्स क्या है, बिकॉज ऑलरेडी वेदों में लिखित हुआ है, मीन्स मतलब मीन्स दे हैव ऑलरेडी रिटेन इन द डिपिक्शन. सो दे टोल्ड दैट हाउ टू मेक द ग्रैनुल्स आल्सो, हाउ टू मेक द भस्मास आल्सो, दे टोल्ड. एंड वी प्रिपेयर्ड. आपको बड़ा बड़ा मशीन भी नहीं चाहिए, उसी समय पे मशीन्स नहीं है. So what are the different procedure they have followed, and same thing we followed, and we created a small granules within the capsules, and that will be very useful. And ये मिलेट का पाउडर है, उसके साथ ड्राई फ्रूट का जूस मिलावट हुआ है. ये मिलेट पाउडर खाने से आपको, बॉर्नेट मिलेट बोलता है, जो भी डायबिटिक पेशेंट्स होगा ये मिलेट पाउडर खाएंगे मीन्स डेफिनेटली डायबिटीज कंट्रोल रहेंगे. सो ये भी पहली बार इन दुनिया में एक एफर्विसेंट टैबलेट बना है. आप जो भी सब्जी खरीद कर रहे हो मार्केट में, वो पूरा बहुत पेस्टिसाइड, बहुत सारा केमिकल्स रहता है. ये 5 टैबलेट पानी के अंदर डालो, एंड सारा पेस्टिसाइड रेसिड्यू रिमूव हो जाएंगे. सो दिस इज द फर्स्ट पेटेंट इन द वर्ल्ड. एंड ये कान जी, कान साहब, टाइम है? Yes, sir. Continue, sir, please. ठीक है, ठीक है. You are audible and हाँ ठीक है. सो मतलब कोई स्पीकर Oh, sir, the इंतजार. lecture was so interesting, and the images that work that you are doing, it was Oh, very, thank you. it Thank is you very very much for the appreciable, sir. authority. Yeah, yeah. So these are the things. अभी कई सारा फ्रूट्स लेके उसको ग्रैनुल बना के छोटे बच्चों को जो भी स्कूल जा रहा है, वो स्कूल बच्चों को देने से उसका माल न्यूट्रिशन एराडिकेट कर सकता है. सो ये न्यूट्रिशन एस्पेक्ट से ये थोड़ा थोड़ा मीन्स लाइक स्मॉल ग्रैनुल्स, वो स्वीट रहता है, मीन्स अच्छे से खा सकते हैं. अगर बीट रूट पका के आप उनको दे दोगे वो खा नहीं पाएगा. सो ऐसे ग्रैनुल दे दोगे वो खाएगा, बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा है. सो न्यूट्रिशन भी सप्लाई होगा. एंड ये ड्राई फ्रूट से वाइन और तरीका का मीन्स अभी हम ग्रेप वाइन को रिप्लेस करना चाहते हैं, कई सारा फ्रूट्स का वाइन प्रिपेयर कर रहे हैं. वन ऑफ माय स्टूडेंट ही बिकमिंग एंटरप्रेन्योर एंड ओनली वाइन इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर रहा है. नाउ टुमारो ही इज कमिंग फ्रॉम दी अनार का जो फूल होता है, अनार का फूल से भी वाइन बना रहा है. सो इट विल बी बहुत शानदार रहेगा. ये ड्राई फ्रूट का पापड़ है, एंड कैंडी है, पूरा ड्राई फ्रूट का मीन्स लाइक ऑल काइंड ऑफ द कॉस्मेटिक्स, लिप ग्लास, जो भी मीन्स खूबसूरत के लिए भी मीन्स खूबसूरत स्किन के लिए, अट्रैक्शन के लिए भी मीन्स बहुत सारा चीज बना रहा है. लाइक ये लिप बाम है, और एवरीथिंग लाइक ए बी वैक्स एंड कोकम बटर, कोको बटर, शिया बटर, ये सारा हार्टिकल्चर क्रॉप्स का ये पूरा बटर एक्सट्रैक्शन करके ये बन रहा है. एंड यू कैन मीन्स ऑर्डर आल्सो, डोर डिलीवरी भी है हमारा मीन्स हर प्रोडक्ट्स. एंड दीज आर ऑल काइंड ऑफ द ग्रैंड, छोटा बच्चे के लिए, सिर्फ छोटे बच्चे के लिए, एंड बड़ा भी खा सकता है, बिकॉज ओनली वेरी टेस्टी. सो हमारे लिए, बिकॉज यंग जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनका माल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए, एंड उनका मेधा संपत्ति इंक्रीज होना चाहिए, आईक्यू इंक्रीज होना चाहिए. सो उसका वजह से, बिकॉज वी आर फॉर्मुलेटिंग द लॉट मेनी प्रोडक्ट्स फॉर देम. एंड दीज आर द ड्रैगन फ्रूट के साथ सो जेल्स बना रहा है, मल्टीपर्पज जेल, एक खूबसूरत चेहरा बनाने के लिए मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आजकल मीन्स लाइक ये दुनिया तो मीन्स कॉस्मेटिक दुनिया तो आगे बढ़ रहा है. सो वी कैन टैप द लॉट ऑफ पोटेंशियल टू क्रिएट द बिजनेस. एंड दीज आर ऑल्सो सेम थिंग. इसीलिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि जर्नी ऑफ द सोल, लाइफ ऑलवेज कंटिन्यूस, कभी भी स्टॉप नहीं हो सकता. आप ये जन्मा हो और दूसरा जन्मा हो और कई सारे जन्म आपको मिला है, बट सकृत करो, बिकॉज यू नीड टू यूटिलाइज your duty, and how best you can give the service to the society. It is a very important that, and people need to give the service to the society. And we need to bring the integrity among the all religions,
and everybody need to unite together to build up the nation, to increase the economy, to increase the employment. So that's why a small effort we put, that means how to create the employment in our students, and immediately after the completion of the BSc, MSc, PhD also, and they are becoming entrepreneur, and we created the Ikigai, one company, and Show Bio, and I Grow, and so many companies we have created, and they are sustainable and employ. आजकल मीन्स क्या है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो promoting the startup, and tomorrow, day after tomorrow, manage people, because manage, you know that Hyderabad is the biggest entrepreneur skill create करने वाला नेशनल इंस्टीट्यूट है. ये manage people also, ओडिशा से 53 farmers they are visiting to our lab, क्योंकि एंटरप्रेन्योर स्किल, क्योंकि हर इंसान को गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल है. आप बिजनेस करोगे, गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा कमा सकते हो. सो हर स्टूडेंट के लिए मैं ये मैसेज है, आप एंटरप्रेन्योर बनो, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश मत करना. गवर्नमेंट जॉब सो मंथ होते ही ऐसा मीन्स इंतजार करना पड़ता है, कितना सैलरी आएगा, मेरा कितना मनी चलेगा. बट सो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करोगे, आपका मनी रोटेट होते जाएगा. यू नेवर बी पुअर. वट एवर डिजायर यू आर हैविंग, यू कैन एबल टू फुलफिल. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir, for a wonderful animated presentation that you had given and the work that you are doing there. Very, it is appreciable, sir. Thank you for your presentation and lecture. A very fruitful session, sir. And lots of fruits are there. So it is fruitful. Happy to see you again Yeah, after lockdown. yeah. So I would like to request Dr. Ismail, sir, to present vote of thanks. Yes, sir. ये mic बंद कर. Good afternoon. ये बंद है mic. चलो बोलो. वो इसका mic चालू है ना? बोलो. Good afternoon, everyone present in offline as well as online mode. It's my privilege to honor and to extend a heartfelt vote of thanks to Dr. J. Shankar Swami, sir, for his enlightening and informative lecture on ancient Indian horticulture system. Sir, your session has provided us with a deep understanding of the rich heritage of horticultural practices in ancient India. Your insights into traditional farming techniques, sustainable agricultural methods, and their relevance in today's world were truly inspiring. The way you connected ancient wisdom with modern scientific advancement has given us a new perspective on the significance of indigenous horticultural knowledge. On behalf of J.A.T management, principal, staff, and student, and accuracy, I sincerely express our gratitude for sharing your expertise and valuable time with us. Your lecture has not only enhanced our knowledge, but also encouraged us to explore and integrate these traditional practices into contemporary research and education. We are truly grateful for your presence and look forward to more such insightful interactions in the future. Thank you once again, sir, for your valuable contribution and guidance. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Can I leave? Can I leave? Can I leave? This is Munawar Ahmed, sir, IQAC coordinator of the college. And I extend my gratitude to you, sir, especially because You're welcome. the topic that you covered today is very much relevant to all of us. And definitely it was very much informative, very inspiring one also. You opened the whole world of horticulture
and related them with the Indian knowledge system. And you have given so much importance to the ancient knowledges like botanical knowledge or things that we Indians have given to the world. So, being the organizing member of this program, sir, this workshop, I am grateful to you once again. And sir, we expect that in future also you will help us whenever we need your help. Uh, Especially offline mode, sir, because we want to see you in person. Yeah, it's great to have everybody right in this conference, and you have taken a great initiatives. And I'm very thankful to the all organizing members and as well as the coordinators for this entire webinar. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Can I leave? Can I leave now? Yes, sir. Yes, sir, yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for inviting me. Thank you. Right. बिल्कुल आप अभी आप बड़ी है काले
उसकी मर्जी से बैठे हुए हो। First of all, I really appreciate the patience that you have been showing continuously for being with us. And you see, the topic Indian knowledge system is a little bit hard for us because of the terminology, like specific words. But still, you are there, you have been staying with us. So, and in a very short while, we will have our last session, and the session will be delivered by Dr. Vijay sir. And those who were yesterday there in the research methodology conference, international conference, they might have got the idea how multi-talented, multifaceted personality is. So, as you have stayed with us this far, I request that you stay tuned with us for in the last session, and very soon the last session will start. By that time, I will share some slides of my review and conduct the lecture on Indian knowledge system. My slide. शेयर करो ना, शेयर स्क्रीन करो. We are at our initial stages of understanding the Indian knowledge system, and definitely is our university which is describing us this subject under NEP 2020. So it's our educational responsibility that we uh, take the initial stages first, and then try to understand our Indian knowledge system, which we did not have earlier. As our in charge principal, Dr. Sarma Sarman, told us that we should understand, we should know our history, our culture, and everything that went before us in the past. And it will make us more Indian, will make us better Indian. So let's start our third session.
on Indian knowledge system. As you see, the title is given. Indian knowledge system and treasure trove. Treasure trove means a hidden treasure of wisdom. It's when we dig our past, if we go back to our past, we will find nothing but lots of treasure of wisdom. So, introduction to the Indian knowledge system. Indian knowledge system is also known as Bharatiya Jnana Parampara. That means what parampara of knowledge. We know. So this Indian knowledge system in Sanskrit or in Hindi it is called Bharatiya Jnana Parampara. So the whole parampara of knowledge encompasses a vast array of disciplines spanning philosophy, spirituality, science, and the arts. From the ancient Vedic text to modern innovation, Indian knowledge system. This system emphasizes the interconnectedness of all things and offers a unique perspective on life, the universe, and the pursuit of knowledge. See, yesterday, one of the resource persons told us that we don't give so much importance to our culture, to our past, whereas it is full of wisdom. If you go to farmer, if you go to artisan, so definitely he will give you so much knowledge about his profession, about his work that he does in the field or in his house. So you will come to know about him, and that will also be a source of great source of knowledge for us. So we should not think that Indian people or Indian past or Indian history or Indian culture doesn't have anything of importance. It is very much important. Only the thing is that we don't go into that past and dig out the knowledge. Okay, as you must know that uh, very old books, very ancient books of India are four Vedas. They are Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, and Atharva Veda. Vedas. See, Swami Vivekananda himself says that we Indians should call ourselves, those especially call themselves Vedantists. Means they are the believers, they are the followers of Vedas. It means Vedas are the books that are full of true knowledge, full of ancient knowledge, ancient wisdom. If we study it, definitely we will come to know so many new things that we still don't know in 21st century. So for example, Rig Veda. Rig Veda is the oldest Veda in our Vedas, in our four Vedas. It contains hymns, prayers, and rituals dedicated to various deities. And second, Sam Veda focuses on chanting and melodic recitation with hymns used in religious ceremonies. And then Yajurveda, it includes the instructions for rituals and sacrifices, emphasizing the connection between actions and results. And then Atharva the last Veda, contains knowledge of medicinal herb, magic, and spells, highlighting the practical application of Vedic wisdom. And then after Vedas, the texts that come to us are Upanishads. Upanishads means these are the texts are basically about Upanishads. Okay, so I stop here because our very much esteemed guests have joined us, and we will have the opportunity to hear start the session, and I
request all the participants that you do listen to him because he is really a very, very dynamic resource person. Every one of you will learn so many things from him because yesterday we have had the experience of his knowledge, his expertise, and his experience that he shared with us. And that experience was of whole world. He has visited many countries, many universities, and shared with us the first-hand experiences. For example, yesterday he was sharing with us the knowledge that in Germany, he met a research scholar who was paid 2,40,000 rupees per month as a scholarship, but that scholar completed his PhD in 18 months only, and in half time. He was given 3 years time, but he completed his PhD in 1.5 years. So you see, this is the honesty, this is the ethics of researchers, this is the ethics of research scholars that they should work diligently to complete their research work and complete it as early as possible. Now we come back to our Indian nervous system. So I was talking about Upanishads. Upanishads are there. Again, नहीं अभी आया कंटिन्यू करो आप बोल रहे हैं। You see, Upanishad is a fully spiritual text. For example, Upanishad talks about self-realization. See, the greatest knowledge, knowledge of the self. So we should realize ourselves who we are, from where have we come here, what is the purpose of our life, how to live life meaningfully, and what is the main purpose of life, and what is good life. These things are discussed under this topic self-realization. Upanishad, this ancient text, talks at large about this. For example, Upanishads delve into the nature of the soul. See, we all human beings believe that our body is transiting, it will change one day, it will become once again uh, inanimate matter, but our soul is eternal, our soul will remain forever, our soul will be in unity or in harmony with the God, means in afterlife. And the Muslims believe that after death, our soul goes back to its original place, and that is heaven, and then we live there forever. So this is our belief. So same thing is given in Upanishad about the soul, and it's a relationship with the divine. It's a they say that our soul is actually the part of divine, and then once again it will go back to its main source and mingle with it, uh, seeking ultimate liberation through self-knowledge. And those who get the self-knowledge, definitely their soul will fix. Ah, the second concept, the concept of Brahman. Brahman means universal soul. They believe it's a ancient scholars believe that our soul is Atman, and our individual soul is actually the part of the larger soul. And that larger soul is called Brahman. They produce the concept of Brahman, the ultimate reality and the source of all creation, emphasizing the unity of all existence. See, and so we all individual souls will one day mix with that universal soul. And that will be our job, that will be our liberation, that will be our salvation. And after karma and reincarnation. Upanishads talk about karma, our actions. If we do good actions, so definitely we will get the chance of liberation. Otherwise, our life will again and again will be in the cycle of life and death. Again and again, we will get the life
in different forms, and our it's a body in different forms. Okay, just now I came to know that our last resource person, Dr. Vijay Khare, Honorable Dr. Vijay Khare, will join us at 1 o'clock. So, as soon as he comes, we will join him and we'll have this session. So, by that time, put up with me, dear participants. So, these are the three basic concepts described in Upanishad. It's a self-realization, then the idea of universal soul, and the idea of karma and reincarnation. See, these texts explain the laws of karma and reincarnation, emphasizing the cyclical nature of life and the importance of ethical conduct. Now, in Indian knowledge, as our last resource person, Dr. J. Shankara Swami was delivering the lecture on Ayurveda on horticulture, and he was explaining in great detail that how holistic approach, how natural remedy, how mind-body connection was the essential part of Indian knowledge system in ancient time, even in today. So we study our knowledge. Ayurveda recognizes the interconnectedness of the body, mind, and spirit, helping to restore balance and well-being. So, natural remedies it utilizes our diet, lifestyle modifications, and other natural therapies to address health concerns. And then last, the mind-body connection, as we call it yoga. Yoga means unity, unity with divine, unity with nature, and unity with oneself. For example, we human beings are a combination of body and soul. So these two things must be unity, must be very much in connection with each other. Ayurveda emphasizes the importance of stress management, mindfulness, and emotional well-being in maintaining wealth. And we all know that those who are stressed, it means that their mind and body are disintegrated. They are not connection with each other. So for connecting each other, we do some meditation, we do some yoga, we do some spiritual activities, and then these two aspects of our personality connect strongly, and then we become a strong human being or strong individuals. Okay, in yoga, the art of mind-body integration. See, yoga is basically done for the integration of mind and body. For example, Hatha Yoga, a physical practice involving postures, breathing exercises, and meditation aiming to cultivate inner harmony. And second, Raj Yoga. And this second type of yoga focuses on mental discipline and self-control, leading to higher states of consciousness and spiritual enlightenment. Now, see, our soul is also has different states of its height. The more heightened states you pass, you will become better and better, or you will go to the higher levels. Then, Kalpa Yoga emphasizes selfless action and service to others, seeking fulfillment through purposeful activity. Means this yoga, karma yoga is about selfless activities. It's a you for others, do something good for others, and make others happy, make others life better, and then this yoga is done in this way. Now, see in Indian knowledge, this thing is also very much important. This science, astrology is somewhat different than astronomy. Astrology is the science of celestial influence. It's how heavenly bodies change their places and they influence and put an impact on human life. That we call Jyotish, that we call Kundali. Means how heavenly bodies change their places and human lives get affected by them. That's why in Hindu traditions about Ketu, it's a day study, and then they say that your day is good or not, what you do for next year, time better. For example, Jyotish, Indian astrology known as Jyotish, uh, uh, uses the positions of celestial bodies to understand individual characteristics and predict the future events. And then nakshatras.
Nakshatras mentioned Jyotish incorporates 27 nakshatras, lunar constellations, and 12 zodiac signs to provide a comprehensive understanding of an individual's personality, life path, and potential. And then guidance and empowerment. See, astrology offers insights and guidance to navigate life's challenges and make informed decisions, empowering individuals to take control of their destiny. See, it is believed in Indian knowledge that astrology is an important subject that we should know about. Okay, now mathematics, it is also a very powerful subject. The Indians must study because we have originated, we have contributed a lot in this subject. For example, especially Greek people or Greek philosophers are given credit for the development of mathematics, but we don't know the contribution of the Indians in this subject. So, for example, we all know who has given the concept or given the number zero to the world, who has given our Indian philosopher Aryabhat, our Indian mathematician Aryabhat. He has given zero to the world, and it is known by whole world that this Indian mathematician is the inventor, is the creator of zero, the concept of zero. Yeah, a fundamental element of modern mathematics was developed in India centuries ago. Then decimal system, Solomon talked about it, that we Indians have given decimal system. Yeah, 0 to 9. 0 to 9 numbers have been given back. And you see, we develop all the numbers on the basis of this 0 to 9, 10 numbers, 0 to 9. For example, when we write 10, so we use 1 and 0. When we write 11, so we write 2 times 1 1. When we write 12, so 1 and 2. It means of all numbers we write on the basis of these decimal numbers, these 10 numbers, 0 to 9 numbers. So, then trigonometry. So trigonometry is actually connected to Pythagoras, but you see Indians have also worked upon it and developed this trigonometry. Then algebraic calculus. See, algebra is very science based on assumption. We assume some symbols and then we find out the actual quantity or actual number of something else by assuming. So this is also developed by the Indians. In architecture, we know that we Indians have, or our country, India has temples of 7,000, 10,000 years old in Indonesia, Malaysia. It means so we were so much developed at that time. And as ancient Indian temples like the ones in Khajuraho demonstrate architectural grandeur and intricate carvings, showcasing the beauty of stonework and craftsmanship. Okay, I think our resource person, okay, this is still not there, but very soon he will join us. And then places, magnificent palaces such as the Red Fort in Delhi reflect a blend of architectural style and artistic embellishments representing our grandeur and cultural influence. And then Buddhist stupas. See, during the peak period of Buddhism, our country, India, built so many Buddhist stupas. You know stupas, I think. The impressive stupas like the great stupa at Sanchi showcase the influence of Buddhist architecture. So, the influence of Buddhist architecture symbolizing enlightenment and spiritual awakening. Then we come to the dance form, music and dance. Um, music, eight ragas, two pada, and one is
music, dance, and spiritual harmony. Indian classical music is based on ragas, melodic frameworks that evoke specific emotions and mood treatments in both music and dance. And then Tala, the rhythmic structure of Indian music is defined by Tala, rhythmic cycles that create a framework for improvisation and rhythmic interplay. Then dance styles. India boasts a rich diversity of dance forms, each with its unique traditions, costumes, and movements, expressing stories, emotions, and spiritual themes. For example, Bharatanatyam, then Kuchipudi, and then see many different forms in this dance performance express different stories, they tell different stories by their facial expressions, by their costumes, by their different ways of movement. Then come our ancient texts like Ramayana and Mahabharata. See, the Ramayana are simplicity narrates the adventures of Lord Rama and his journey to rescue his beloved Sita, emphasizing themes of love, dharma, and divine intervention. See, Rama is known as an ideal king, exiled king, an ideal son, an ideal husband. So we learn these values from the story of Ramayana and then Mahabharata. This is the story, another very now mythic poem explores the complex themes of beauty, justice, and the consequences of actions, featuring a vast cast of character and philosophical dialogues. So, see, even today, Westerners also quote the lines from Mahabharata, from Ramayana, from Bhagavad Gita, because these texts are full of wisdom, they are having philosophical knowledge, that still that can be useful to us. Then spirituality and metaphysics. See, metaphysics is the branch of philosophy in which the theory of reality is discussed. What is reality? Reality is this physical world or some spiritual world or a mixture of both or this physical world nothing. So this is called metaphysics. The impact of Indian knowledge on the world. See, science and medicine. India's contributions to mathematics, astronomy, and medicine have had a profound impact on scientific advancements worldwide. And then spiritual practices, yoga, meditation, and mindfulness practices originating in India have become integral parts of modern business and personal growth practices and as art and culture. Indian art and culture, art music, dance, and literature have inspired countless artists and thinkers across the globe, enriching global cultural diversity. Okay, preserving and dividing the Indian knowledge system. See, we should preserve, we should divide. We will once again, we should view birth to Indian knowledge system, educate, for example, our in charge principal Salman and first resource person, she gave so much importance to that we should divide, we should give birth again to Indian knowledge. Education and research, promoting academic institutions and research centers dedicated to studying and preserving the Indian knowledge system. And then digitalization and accessibility, making ancient texts and knowledge readily accessible through digital platforms and online resources. Then community engagement, engaging with local communities to revitalize traditional knowledge and promote its relevance in modern life. See, these things are important today. If you do this, so definitely Indian knowledge will be practical. It will become applied Indian knowledge system. Yeah, so we should apply them and then we will make a mark in the world and say that we Indians are totally Indians now. Nothing is mixed of others in us. And then conclusion, embracing the richness of India's legacy. The Indian knowledge system stands as a testament to the enduring power of ancient wisdom and its relevance in the modern world. Let us embrace its richness and continue to learn from its profound insights from generations to come. So I conclude here my presentation.
I thank to all the participants who took up with me for the whole session, and I hope nobody mind, because we resource persons were not very much in the distance, and I hope that our last resource person, Dr. Vijay Sare, is with us now, and very soon we will have the opportunity to get. And I request him to join the session. Please kindly bear with us for more 5 minutes. If the resource person comes, so we will continue the session. Otherwise, we will take up. Most welcome, because I see the participants, there are many esteemed participants are also there. If you have anything to share with us, it will be uh, positive to take on your part. The participants, they contacted our resource person, Dr. Vijay Sare, and he intimated us that within 5 to 10 minutes, he will be joining us, and we will have the honor of listening to him. And once again, I request if any participant has anything to share with us, so come forward, they are most welcome, and it will be a kind of support on their part to this workshop. Here in online mode. So thank you to all. अगर आप लोग भी कुछ शेयर करना चाहें तो आप बोल सकते हैं। New learning for us that totally 421 participants registered themselves in this workshop. So it is really encouraging support on your part, on the part of all the participants. So J.A.T. Senior College expresses its gratitude to them that they supported us, and they really
participated and joined us in our online workshop on Indian knowledge system. Anyone from the participants side, if you have anything to share, if you want to give your free time, so come forward, you are most welcome.
All the participants will be shared by the link of this workshop. As soon as you fill your feedback, when you do your feedback, then participate. Certificate of participation will be given to you very shortly. Okay, so uh, situation is there that we could not connect with the current Dr. Vijay Harris, because he has very important meeting in University of Pune or something like Pune University. So he could not join us. We conclude here our workshop on an Indian knowledge system, and on behalf of J.A.T management, J.A.T Senior College, our in charge principal Dr. Salma Sattar, and our secretary of J.A.T Trust, Alhaj Ansari Nihal Ahmed Sahib, our chairman, Alhaj Honorable Alhaj Anis Ahmed Sahib, treasurer, Advocate Dodi Niyaz Ahmed Sahib, and our whole faculty members, students, teaching, non-teaching staff. I express my gratefulness to you all that you spared your time and joined us and remain from beginning to end in this workshop. And I'm thankful to my whole team of IPSC, especially the assistant IPSC coordinator, Dr. Aziz Momi, for giving his valuable support in arranging this program. And thank Dr. Jaya Khan sir, who at a short notice arranged a very valuable resource person, Dr. J. Shankara Swami, and 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 thankful to Dr. Mohammed Ismail Muhammad that who worked tirelessly yesterday as well as today in making this workshop possible. I am thankful to our technical support and the HOD of Computer Science Department, Professor Naveed Akhtar sir, and I am thankful to the students of the college
without any discrimination of science and arts and other faculties, even cultural science. They, they say just to become the part of this workshop and make this workshop a success. And thankful to all the participants from other colleges, all the faculty members, all the students, especially the faculty members of this PH Pharmacy College, Malegaon Camp, City College, especially Dr. Shakir Ahmad sir, who was continuously there, and Dr. Hamdani Ridwana ma'am for your kind support. Thank you, ma'am. Whenever we ask for your help, you definitely come forward instantly, and it is a really a great support of yours to us. And I am grateful to all the other participants whom I could not see and could not count with my gratefulness. And I conclude this workshop. Thank you very much, each and every one of you, for being with us. Thank you, thank you. It was an honor. And we will share the link of feedback, and you give your feedbacks. Share chat box of the That feedback link is given on the chat box, and one in the group I will share. And after giving your feedback, you will be given the certificate of participation. Thank you once again. Thank you.